1. Turmoil, noun. Afratafri, khalbali, halchal. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Synonyms: confusion, upheavals, turbulence, tumult, disorder, commotion, disturbance, agitation. 2. Vanquish, verb. हरा देना, गालिब आ जाना, शिकस्त देना. Defeat thoroughly. Synonyms: conquer, defeat, utterly, beat, hollow, trounce, annihilate, triumph over. 3. Repressive, adjective. इंसदादी, सरकोबी, जाबिराना. Especially of a social or political system, inhibiting or restraining personal freedom. Synonyms: oppressive, authoritarian, despotic, tyrannical, tyrannous, dictatorial, fascist, autocratic. 4. Quell, verb. कुचल देना, मिटा देना, कम करना. Put an end to, a rebellion or other disorder, typically by the use of force. Synonyms: put an end to, stamp out, put a stop to, end to, finish, get rid of, crush, put down, check. 5. Pitted, adjective. खुरदरा, ऐसा अमल जो गहरे दाग पैदा करे. Having a hollow or indentation on the surface. Synonyms: pockmarked, pocked, scarred, blemished, marked, pocky, potholed, rutted, ruddy, holy. 6. Tortuous, adjective. पेचीदा, बिलदार, मुश्किल. Full of twists and turns. Synonyms: twisting, winding, curving, curvy, bending, sinuous, undulating, coiling, looping. 7. Complacent, adjective. मुतमैन, इत्मीनान. Showing smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievements. Synonyms: smug, self-satisfied, pleased with oneself, proud of oneself, self-approving, self-congratulatory. 8. Formidable, adjective. डराना, खौफनाक, हौलनाक. Inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. Synonyms: intimidating, forbidding, redoubtable, daunting, alarming, frightening, terrifying, petrifying. 9. Partisan, noun. कट्टर, सख्तगीर, हामी. A strong supporter of a party, cause, or person. Synonyms: supporter, follower, adherent, devotee, champion, backer, upholder. 10. Countenance, noun. हुलिया, चेहरा. A person's face or facial expression. Synonyms: face, features, physiognomy, profile, facial expression, expression, look. 11. Worsen, verb. बदतर होना, ज़्यादा खराब होना. Make or become worse. Synonyms: aggravate, exacerbate, make worse, compound, add to, intensify, increase, magnify. 12. Erupt, verb. भड़कना, भड़क उठना, आतिशफशां का फटना. Of a volcano, become active and eject lava, ash, and gases. Synonyms: emit lava, belch lava, become active, flare up, eject/vent material, explode. 13. Palpable, adjective. छूकर महसूस करने के काबिल. Of a feeling or atmosphere, so intense as to seem almost tangible. Synonyms: perceptible, perceivable, visible, noticeable, appreciable, discernible, detectable. 14. Leverage, noun. कुवत, असर, बीरमी निज़ाम. The exertion of force by means of a lever. Synonyms: grip, purchase, hold, grasp, contact, attachment, support, anchorage, force. Is history repeating itself in the country? Yes, in many respects, today's political turmoil and crisis have strong echoes of the past. Government-opposition confrontations have been frequently witnessed before. So, too, has lack of tolerance between political opponents, who view each other not as rivals but enemies to vanquish in a war. Arrests of opposition members, cases against political leaders and repressive steps to quell protests are wearingly familiar.
Clashes between the president and executive are also a throwback to past tussles. Courts have long been called on to arbitrate political disputes, with their rulings often becoming controversial. The military establishment's role in backing one political side against another is hardly new. Nor is its outsized role in the political arena, despite its claims to the contrary. Power plays by state institutions that pitted them against one another have been a recurring feature of the country's tortuous history, as have efforts to curb media freedom. Many people in the country believe that as we have been here before, there is little to be overly concerned about. This too shall pass. After all, every time a way was found out of crisis, even if it left democracy weaker. The trouble with this rather complacent view is that it overlooks the fact that Pakistan today is very different, with objective conditions having fundamentally changed. The country faces formidable challenges in a deeply divided and politically fractured state. Several overlapping crises, political, economic, and constitutional, are reinforcing each other, while a resolution of the political crisis, the key to unlocking others, is nowhere in sight. Worse, it isn't clear what solution would work and be acceptable to various stakeholders. The first aspect of the situation today that sets it apart from the past is the sharp polarization in the country. This is unprecedented despite Pakistan's record of divisive politics. Never before have people, society and state institutions been so divided by their partisan preferences and resistance to countenance a view other than their own. Polarization and a zero-sum attitude have eliminated the middle ground, making it harder if not impossible to reach a compromise to end the political battles endangering the country's stability. This is happening when Pakistan faces the most serious economic crisis in its history. To be sure, the country has confronted financial crises several times before. This compelled it to repeatedly seek IMF bailouts, making it the world record holder in the number of fund programs it has had, 23. But there are at least 3 ways in which the current economic crisis is a departure from the past. Thanks to decades of fiscal profligacy, Pakistan is so deeply mired in debt that it has to keep borrowing more to repay previous loans. Its external financing requirements have risen so much that conventional bailout packages hardly give it any breathing space and further injections are perpetually needed. This situation will only worsen until the country secures debt relief, for which it needs a credible, reformist government. Political brinkmanship is driving the situation out of everyone's control. The second aspect of the economic crisis is that friendly countries Pakistan has relied on for funds now seem fatigued and overburdened by its requests. This is evidenced by delay in their financing commitments coming through. That, in turn, has delayed the deal with the IMF, with whom the trust gap has widened. Moreover, Pakistan's geopolitical relevance has diminished in the West's perception, lowering its stake in the country's future. The third aspect of the current economic challenge is the cost of living crisis, fueled in part by external factors. Never before did Pakistan have to deal with a public finance crisis in such an adverse global financial environment. Soaring inflation and energy shortages are fueling widespread public discontent that can erupt into unrest any time, with consequences for its stability. The present also differs from the past in greater youth activism in politics. The political impact of the country's youth bulge is now palpable and evidenced by their participation in rallies and protests by political parties, especially those organized by PTI. True, students played a prominent part in past political movements, usually through traditional vehicles like student organizations and unions. But youth activism today is more broad-based and expresses itself in support for the brand of populist politics represented by Imran Khan. This has obvious electoral implications. Over 44% of the electorate, around 55 million, are young voters between 18 and 35 years of age. If youth activism translates into votes at the ballot box, it could be a game changer that can determine the outcome of the next election. Meanwhile, technology has created a more informed and connected citizenry, while social media today is another new factor shaping the political environment.
This means traditional methods by which the government or establishment controlled or determined the narrative no longer work. While the electronic media is often subjected to government controls, social media cannot be restricted. It has become a mobilizing vehicle that taps into and galvanizes public sentiment and shapes opinion. Finally, there are now limits to the political influence exercised by the military establishment. In the past, it found political allies with fairly strong bases of public support and some credibility to use as countervailing forces against political leaders/parties it sought to exclude from politics or government. This also enabled it to tilt electoral outcomes in their favor, as witnessed during the 1990s. But today, the two traditional parties available for this purpose are in secular decline and shadows of their former selves. That is why one of them is so afraid of elections in its previous regional stronghold. Without credible, strong political partners, the establishment is unable to use its old playbook, because its political leverage is also not what it once was. What does this all mean? It means the country is now in uncharted territory, with a high degree of unpredictability. This makes it hard to gauge where it might end up, as the past is now a poor guide. It suggests that traditional means of crisis management and ensuring political outcomes may not work. As a result of political brinkmanship, the situation can spin out of everyone's control and drive the country to the edge of an implosion. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, April 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. क्या मुल्क में तारीख दोहराई जा रही है? जी हाँ, बहुत से मामलात में आज के सियासी खलफशार और बहरान में माजी की मजबूत बाज़गश्त है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान महाज आराई पहले भी अक्सर देखी जा चुकी है। इसी तरह सियासी मुखालिफिन के दरमियान भी रवादारी का फुकदान है, जो एक दूसरे को हरीफ के तौर पर नहीं बल्कि दुश्मन के तौर पर देखते हैं ताकि जंग में शिकस्त दी जा सके। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की गिरफ्तारियां, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और मुजाहिरों को कुचलने के लिए जाबराना इक़दामात आम हैं। सदर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान झड़पें भी माजी की कशमकश की याद दिलाती हैं। अदालतों को तवील अरसे से सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए बुलाया जाता रहा है और उनके फैसले अक्सर मुतनाज़ा हो जाते हैं। एक सियासी फरीक को दूसरे के खिलाफ हिमायत करने में फौजी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार शायद ही कोई नया हो। न ही सियासी मैदान में इसका बड़ा किरदार है, बावजूद इसके कि इसके दावे इसके बरक्स हैं। रियासती इदारों की जानिब से ताकत के खेल जो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, मुल्क की तकलीफ दे तारीख का बार बार हिस्सा रहे हैं। जैसा कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क में बहुत से लोगों का मानना है कि जैसा कि हम पहले भी यहाँ रह चुके हैं, इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये भी गुजर जाएगा। बहरहाल, हर बार बहरान से निकलने का कोई रास्ता निकाला जाता था, भले ही इसने जमहूरियत को कमजोर कर दिया हो। इस गैर मुतमईन नजरिए के साथ मसला यह है कि यह इस हकीकत को नजरअंदाज करता है कि आज पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ है, मरूजी हालात बुनियादी तौर पर तब्दील हो चुके हैं। मुल्क को एक इंतहाई मुनक़सम और सियासी तौर पर टूटी फूटी रियासत में शदीद चैलेंजों का सामना है। सियासी, माशी और आईनी तौर पर कई बहरान एक दूसरे को तक़वियत दे रहे हैं, जबकि सियासी बहरान का हल, जो दूसरों को खोलने की किलीद है, कहीं नजर नहीं आता। बदतरीन बात यह है कि यह वाज़ेह नहीं है कि कौन सा हल काम करेगा और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल होगा। आज की सूरत हाल का पहला पहलू जो उसे माजी से अलग करता है, वो मुल्क में तेज पोलराइजेशन है। पाकिस्तान की तफरीका अंगेज सियासत के रिकॉर्ड के बावजूद यह गैर मामूली है। इससे पहले कभी भी लोगों, मुआशरे और रियासती इदारों को उनकी जानिबदाराना तरजीहात और मुज़ाहमत की वजह से इस कदर तकसीम नहीं किया गया था कि वो अपने ख्यालात के अलावा किसी और नज़रिए को कबूल करें। पोलराइजेशन और सिफर रकम के रवैये ने दरमियानी रास्ते को ख़त्म कर दिया है,
जिससे मुल्क के इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाली सियासी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए समझौते तक पहुंचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल हो गया है। ये इस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे संगीन माशी बहरान का सामना है। यकीनी तौर पर मुल्क को पहले भी कई बार माली बहरान का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से इसे बार बार IMF के बेल आउट हासिल करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे वो फंड प्रोग्रामों की तादाद में आलमी रिकॉर्ड होल्डर बन गया 23। लेकिन कम अज कम 3 तरीके हैं जिनसे मौजूदा माशी बहरान माजी से हटकर है। कई दहाइयों से जारी माली बदहाली की वजह से पाकिस्तान कर्जों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे पिछले कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। इसकी बैरूनी फिनांसिंग की ज़रूरियात इतनी बढ़ गई हैं कि रिवायती बेल आउट पैकेजेस शायद ही इसे सांस लेने का मौका फराहम करते हैं और मजीद इंजेक्शन की मुस्तकिल ज़रूरत होती है। यह सूरत हाल इस वक्त तक खराब होती रहेगी जब तक मुल्क कर्जों में रिलीफ हासिल नहीं कर लेता, जिसके लिए इसे एक काबिल एतमाद और इस्लाह पसंद हुकूमत की ज़रूरत है। सियासी गुंडागर्दी सूरत हाल को सबके काबू से बाहर कर रही है। माशी बहरान का दूसरा पहलू यह है कि दोस्त ममालिक जिन पर पाकिस्तान ने फंड्स के लिए इन्हिसार किया है, वो अब उसकी दरख्वास्तों से थके हुए और बोझ तले दबे हुए दिखाई देते हैं। इसका सबूत उनके माली वादों में ताख़ीर है। इसके नतीजे में IMF के साथ मुआहदे में ताख़ीर हुई है, जिसके साथ एतमाद का फ़र्क बढ़ गया है। मज़ीद बरा मगरिब के तसव्वुर में पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासी अहमियत कम हो गई है, जिससे मुल्क के मुस्तकबिल में इसका हिस्सा कम हो गया। मौजूदा माशी चैलेंज का तीसरा पहलू जिंदगी गुजारने की लागत का बहरान है, जिसमें कुछ हद तक बैरूनी अवामिल शामिल हैं। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान को इस तरह के मनफी आलमी मालियाती माहौल में पब्लिक फिनांस बहरान का सामना नहीं करना पड़ा था। बढ़ती हुई अफरात ज़र और तवानाई की किल्लत बड़े पैमाने पर अवामी अदम इत्मीनान को हुआ दे रही है, जो किसी भी वक्त बदअमनी में बदल सकती है, जिसके नताइज इसके इस्तेहकाम पर मुरतब हो सकते हैं। सियासत में नौजवानों की ज्यादा सरगर्मी में भी हाल माजी से मुख्तलिफ है। मुल्क के नौजवानों के उभरने के सियासी असरात अब वाज़े हैं और उसका सबूत सियासी जमातों, खासतौर पर PTI की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली रैलियों और मुजाहिरों में उनकी शिरकत है। ये सच है कि तलबा ने माजी की सियासी तहरीकों में नुमायां किरदार अदा किया, आमतौर पर रिवायती गाड़ियों जैसे तलबा तंजीमों और यूनियनों के जरिए। लेकिन आज नौजवानों की सरगर्मी ज्यादा वसी बुनियादों पर है और इमरान खान की नुमाइंदगी वाली पॉपुलिस्ट सियासत के ब्रांड की हिमायत में खुद को जाहिर करती है। इसके वाज़े इंतखाबी मुज़मरात हैं। 44% से ज्यादा राय दहिंदगान, तकरीबन 55 मिलियन 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान राय दहिंदगान हैं। अगर नौजवानों की सरगर्मी को बेल्ट बॉक्स में वोटों में तब्दील किया जाता है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो अगले इंतखाबात के नताइज का तयन कर सकता है। दरियासना टेक्नोलॉजी ने एक ज्यादा बाखबर और मुंसलिक शहरी पैदा किया है, जबकि आज सोशल मीडिया सियासी माहौल को तश्कील देने वाला एक और नया उनसर है। इसका मतलब यह है कि रिवायती तरीके जिनके जरिए हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट बयानिया को कंट्रोल तयन करती है, अब काम नहीं करती। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अक्सर हुकूमती कंट्रोल के ताबे होता है, लेकिन सोशल मीडिया को महदूद नहीं किया जा सकता है। ये एक मुतहर्रिक गाड़ी बन गई है जो अवामी जज्बात को मुतहर्रिक करती है और राय को तश्कील देती है। आखिर में अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले सियासी असर और रसूख की हुदूद हैं। माजी में इसने सियासी इत्तेहादियों को अवामी हिमायत की काफ़ी मजबूत बुनियादों और कुछ साख के साथ सियासी रहनुमाओं जमातों के खिलाफ जवाबी क़ुव्वतों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पाया, जो इसने सियासत हुकूमत से खारिज करने की कोशिश की थी। उसने इसे इंतखाबी नताइज को अपने हक में झुकाने के काबिल बनाया, जैसा कि 1990 की दहाई में देखा गया था। लेकिन आज इस मकसद के लिए दस्तयाब 2 रिवायती पार्टियां सेकुलर ज़वाल और अपनी साबिका ज़ात के साए में हैं। यही वजह है कि इनमें से एक अपने साबिका इलाकाई गढ़ में इंतखाबात से इतना खौफज़दा है। काबिल एतमाद और मजबूत सियासी शराकत दारों के बगैर इस्टेब्लिशमेंट अपनी पुरानी प्लेबैक इस्तेमाल करने से कासिर है, क्योंकि इसका सियासी फ़ायदा भी वो नहीं है जो पहले था। इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुल्क अब नामालूम इलाके में है, जिसमें आला दर्जे की गैर यकीनी सूरत हाल है।
इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ ख़त्म हो सकता है, क्योंकि माजी अब एक ख़राब रहनुमा है। इससे पता चलता है कि बहरान के इंतज़ाम और सियासी नताइज को यकीनी बनाने के रिवायती तरीक़े काम नहीं कर सकते हैं। सियासी कशमकश के नतीजे में सूरत हाल हर किसी के काबू से बाहर हो सकती है और मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा सकती है। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 3 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.